अरे रुको रुको, आपने ब्रेकिंग न्यूज सुनी? प्राइस ड्रॉप। टेक्स्ट बुक पास पे चल रहा है महा प्राइस ड्रॉप सेल। जी हाँ, टेक्स्ट बुक पास मिलेगा केवल 249 में, उसके नॉर्मल दाम से पूरे 150 रुपए कम, पर सिर्फ 3 दिन के लिए, 16, 17, 18 अप्रैल। 700 से अधिक एग्जाम और 20 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स का प्रिपरेशन पार्टनर टेक्स्ट बुक पास। Hi, good evening, everyone. This is Shefali Singla, and today we are going to continue our discussion on the previous year questions of computer networks and operating system. Yesterday, we discussed the questions which were asked in year 2022. Those questions were left out. So, first of all, हम 2022 के pending questions discuss करेंगे and followed by the questions which were asked in the year 2021. So those who have joined the session, guys, quickly give me the confirmation. Audio video ठीक है? और अगर आप लोगों का कोई doubt है, you can write that in the chat section. Otherwise, we'll start with the questions. So those who have joined the session live, please give me the confirmation if the audio and the video is fine. So let's start with the first question. This question was asked in 2022. कल हमने थोड़ा इस question किए थे. We discussed the concept of questions on the basis of the concept of fragmentation, offset, and on the basis of data link layer. बाकी के questions आज करते हैं. So this is also based on the IPv4 header and fragmentation offset. तो कल हमने scaling factor discuss किया था. Scaling factor was 8. Why that was 8? I had given the reason as well. राइट तो अभी तक मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आई है ऑडियो और वीडियो को लेकर. आई होप दैट एवरीथिंग इज फाइन. गाइस एक बार फटाफट से कंफर्मेशन दे दो. ओके, थैंक यू ऋषि एंड थैंक यू दुर्गा प्रसाद. ग्रेट. सो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज वाले सेशन का. दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन 2022. अब आप पूछोगे कि मैम ये गेट में भी आया था. बिल्कुल गेट में आया था. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2013. This was asked in 2013. C. All right. So yes, C is the right answer for this question. जिन लोगों का नहीं आया है reason देखते. It is saying that in an IPv4 datagram, the M bit is 0. M bit means M stands for more. अगर more bit is 1, that means some more fragments are coming up. But अगर M bit is 0, इसका मतलब क्या? That is representing that this is the last fragment. यही मतलब होता है last fragment. Okay, so if embed is 0, this means that this is the last fragment. So definitely option B and D is eliminated. हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, दैट इज ए एंड सी. दोनों में डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? लास्ट फ्रेगमेंट का. नाउ इट इज सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ इज 10. अगर हेडर लेंथ की वैल्यू 10 है और हमें एक रो का साइज मालूम है, दैट इज नथिंग बट 4 बाइट्स. अगर हेडर लेंथ बिट इज 10 और हेडर लेंथ की वैल्यू 10 है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 4 in order to get the header size. So header size will be 10 into 4 byte. This comes out to be 40 byte. ये मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किए, ये सबको क्लियर है? क्योंकि बच्चे हमारे पास जो IPv4 हेडर है, वहां पे जब आप हेडर देखते हो तो एक रो के अंदर कितनी बिट्स आ रही है? 32 बिट्स, राइट? तो एक रो के अंदर हियर वी हैव मिनिमम 5 रोज आर देयर, बट हियर दिस इज ऑफ 32 बिट. 32 बिट का मतलब होता है 4 बाइट. सो दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट हियर बाय 4 बाइट. ये रीजन क्लियर है ना? सो हेडर साइज इज 40 bytes. The value of total length field is 400. अगर total length आपको given है 400, total length field is 400 bytes. तो पेलोड क्या होगा? पेलोड इज नथिंग बट कितना डेटा जा रहे हैं. टोटल लेंथ मीन्स टोटल लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ हेडर प्लस पेलोड. पेलोड बोल लो, डेटा बोल लो.
So payload comes out to be total length minus header size, and that comes out to be 400 bytes minus 40 bytes, that is equal to 360 bytes. Yeah, that clear हुआ. Now this is saying that the fragment offset value is 300. This is given to you. Fragment offset value is 300. Now fragment offset की value 300 है, but if we have to represent कि कितनी bytes represent करेगा ये fragment offset, so this has to be multiplied by 8. 8 is nothing but that is the scaling factor, so it comes out to be 2400 bytes. So this 8 is representing the scale factor. This is the scale factor, right? So it is representing that how many bytes were sent before sending this frame offset. तो कितनी bytes sent हो चुकी हैं? 2400 bytes are already sent. अब हमें first byte represent करनी है. Fragment offset is 2400. That means जो last fragment है उससे पहले 2400 bytes send हो चुकी है. तो जो last fragment है, for this fragment, first byte number will be represented by 2400. And this is 2400, and last fragment will be represented by 2789 or 2759. ये कैसे calculate करेंगे? Payload length, data length is 360. तो यहाँ पे हम 360 add करेंगे, so it comes out to be 2400 plus 360. Last byte I'm calculating. Last byte, that will be starting to 2400 so size is 360 minus 1 कर रहे, because we are counting this 2400 also. 2401 से start नहीं हो रहे, 2400 से start हो रहे, so that's why I'm subtracting here 1, so it comes out to be 2759. That is nothing but option C, so this is incorrect. Is this clear? Simple. तो मेन चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी, दैट इज द स्केल फैक्टर. करेक्ट? So answer is C. Let's move on to the next question. Before that, those who are following this session for the first time, जो लोगों का first experience है, first session है, so guys, you can join this Telegram group, that is Shefali Ma'am Textbook. Link is also given in the description box. तो benefits क्या होंगे इस ग्रुप के? एक तो जो भी important announcements है, जो भी मुझे links share करने हैं, जो भी PDF share करनी है, I'll be sharing everything in this official group, that is Shefali Ma'am Textbook. Apart from that, whatever queries or doubts you have, you can post that in the Shefali Ma'am Textbook group. Plus, you can directly interact with me, and quizzes and polls will also be conducted. I can see this PDF on Telegram where this session was conducted. Rishi, जो भी मैं PDF share कर रही हूँ ना, तो those are the PDF जो YouTube पे session हो रहे हैं. यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है point, daily PDF of all the 5 YouTube sessions. जो lecture number 13 है, PYQs of CN and OS 2022, वो कल वाला session है. तो जब आप playlist में जाओगे YouTube में, तो you will get that session. ओके जो आज वाला सेशन है उसमें 2022 के 2 ही क्वेश्चंस है, बाकी के क्वेश्चंस हम कल कर चुके हैं, और बाकी क्वेश्चंस आज हम 2021 के करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 14. सो दैट पीडीएफ आई विल बी शेयरिंग आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन. हर सेशन खत्म होने के बाद मैं उसकी पीडीएफ शेयर करती हूँ. तो दिस इज फॉर ये दोबारा से मैंने अनाउंस किया है. बाकी डेली 5 PM पे मंडे टू फ्राइडे वी हैव द सेशन ऑन दिस चैनल. और अगर आपको नहीं मिलता है चैनल या लिंक में कोई प्रॉब्लम है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. ओके, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईयर 2022. दिस इज आल्सो फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स. Definitely yes, this is also a previous year GATE question, and this was asked in GATE 2017. This was the question asked in 2017 as well.
तो जो लोग फर्स्ट टाइम बेटा सेशन अटेंड कर रहे हो उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप सिंसियरली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो डोंट स्किप, डोंट मिस टू रिवाइज द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि मैम कितने ईयर्स के पेपर्स करने, तो 20 to 25 ईयर्स के कर लो, कम से कम 15-20 ईयर्स के तो कर ही लो। All right. So yes, D is the right answer. It is saying that consider two hosts X and Y connected by a single direct link of rate. This was 10 raised to power 6 bits per second. This is 10 raised to power 8 meter per second. Okay. So basically this is X and Y. They are connected through the single link. Now this is saying that we are given with the bandwidth. Bandwidth is 10 raised to power 6 bits per second. Distance is given as, distance between X and Y is given as 10,000 kilometers. 10,000 kilometers. The propagation speed, speed means velocity is given to you. Speed लिख लो या velocity लिख लो, one and the same thing. This is given as 10 raised to power 2 into 10 raised to power 8 meter per second. X send a file of 50,000 bytes. This means that the file size or message size is given as 50,000 bytes. 50,000 bytes. कल भी मैंने बताया था, you have to keep the units, you have to consider the units because units के basis पे otherwise आपका answer vary कर सकता है. As one large message to one continuously. So basically this is the message size given to you. Let the transmission time and propagation time delays will be P milliseconds and Q milliseconds. We have to return the value of P and Q. P is nothing but that is the transmission time. Transmission time is represented by P, and we know that this is nothing but message size upon the bandwidth. कल हमने ये दोनों formulas discuss किए. Upon bandwidth, you are given with both the values, substitute it and calculate. Propagation delay or propagation time, one and the same thing. Propagation time is represented with Q, and this is nothing but distance upon velocity. Both the values are given in the question, so just substitute the values and calculate it. So message size is given as 50,000 bytes into 8 bits divided by 10 raised to power 6 bits per second. Bits se bits cancel ho gayi. These are 4 zeros. So this is coming out to be 2, 10 raised to power 2. So this comes out to be 400 milliseconds. Correct? Next one. Propagation delay. Distance is given as 10,000 kilometers. I am converting this to meters. Velocity is given as 2 into 10 raised to power 8 meter per second. Meter se meter cancel ho jayega. This comes out to be 5 and 8. So हमें base 3 चाहिए. So this is 3. This is cancelled out. So this comes out to be 50 milliseconds. Correct? So answer comes out to be 450. That is option D. So these were the questions asked in 2022. I hope that this is clear. तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था. Simply you have to calculate the transmission time and the propagation time. Correct? Anyone having any doubt till this point? All right.
तो इसके साथ हमारे 2022 के क्वेश्चंस खत्म होते हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन 2021. 21 में क्वेश्चंस बहुत सिंपल आए थे. नॉट मच कैलकुलेशंस वर रिक्वायर्ड. कल वाले और आज वाले क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए 2022 से, तो उनमें कुछ कैलकुलेशंस वर रिक्वायर्ड. थोड़े से लेंथी थे क्वेश्चंस. 21 वाले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे. It shouldn't take much time. So those who know the answer, quickly write that in the chat section. The operating system stores and dash in order to decide to which user to grant which access rights to which file. ऑलराइट, वेरी गुड. सो नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है. कौन से यूजर को कौन से एक्सेस राइट देने हैं. जैसे कुछ यूजर्स के पास राइट होता है, दे कैन ओनली रीड द फाइल. सम यूजर्स हैव द राइट टू अपडेट और राइट द फाइल. तो कौन से यूजर को कौन से राइट्स देने हैं, कौन से एक्सेस राइट्स देने हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है. दिस इज access control matrix. This is going to contain the information that which user will be assigned which what all access rights. So undoubtedly the answer for this question is it's option C. Next question. This is from operating systems. Answer. Very good, Pooja. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, if the size of the logical address space is, if we are given with the logical address, we can calculate the logical address space. और अगर हमें logical address space given है तो हम logical address calculate कर सकते हैं. Correct? Here we are given with the logical address space as 2 raised to power m. So on the basis of this, we can calculate therefore logical address will be log base to 2 raised to power m, that is nothing but m bits. Now next we are given with the page size. Page का size जो है that is having 2 raised to power n addressing unit. अगर आपके पास 8 combinations होते हैं, 3 bits are sufficient. So this means that in order to represent the page offset, किसी एक word को access करने के लिए कितनी bits चाहिए? n bits are required. That is log base to 2 raised to power n, that comes out to be n bits. अगर हम इसको pictorially देखते हैं, this is, let's assume that this box is representing the logical address. This is representing the logical address. And we have calculated that logical address bits are m. Right? This logical address, जब हम normal, basically ये जो concept है, this is from paging. हमें मालूम है in order to represent, in order to access a required page, आपके पास ये जो offset field होते हैं, this is the offset field, and here we have P, that is representing the page number, right? Offset size comes out to be n. Total bits m bits है, उनमें से n का offset है, so this comes out to be m minus n. अब यहाँ पे क्या पूछा है? Then the higher order m minus 1, m minus n, this is the higher order. Higher order of a logical address designate the, ये क्या represent कर रहा है? Undoubtedly this is representing the page number. So C is, sorry, B is the correct answer. Answer for this question is page number. So this was the question asked from the concept of paging from operating systems. Next question. This is based on operating system. Very good. So this is option C, semaphore. It is saying that a protected variable which can be accessed and changed by a particular set of operations is called. हमारे पास जो semaphores होते हैं, we have two types of semaphores, binary semaphores and counting semaphore.
जैसे ही अप ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इट इज गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय increment the value of the semaphore by 1, and if down operation is performed, then the value gets decremented. तो बेसिकली कोई भी सेट ऑफ ऑपरेशंस कब चेंज होते हैं, किसकी वैल्यू चेंज करते हैं, दैट इज द semaphore. So nothing much is there in this question, straightforward question. This is from computer networks. Each layer of the OSI model receives sources or data from a. कौन सी ऐसे डेटा आते हैं? Hurry up everyone, think logically. Okay. B, C, any other option? C, majority is saying C, so C is the right answer. दुर्गा प्रसाद, आपने A और B दोनों बोला है, तो we have option C, that is supporting both option A and B. हमें मालूम है जब हमारे पास सेंडर साइड पे होता है, we have the sender side and the receiver side. This is the OSI model. So here we have the application layer, presentation layer, session, transport, network. OSI is a 7-layer protocol. Network layer, data link layer, and physical layer. So these are the 7 layers of the OSI model. Same layers will be followed on the receiver side. Here we have the physical layer, data link layer, network, transport, session layer, presentation layer, and application layer. अब जब सेंडर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है, एनी एप्लीकेशन इज सबमिटेड, सो इट इज इंटरेक्टिंग थ्रू द एप्लीकेशन लेयर. जब रिसीवर को डेटा मिलेगा, दैट विल बी रिसीव थ्रू द एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर इज गेटिंग द सर्विस, इट इज सेइंग दैट इट रिसीव्स द सर्विसेज और डेटा. ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा किससे मिल रहा है? फ्रॉम द above layer. Above layer कौन सी? session layer. Network layer is getting the data from the above layer. Network layer के ऊपर वाली layer है transport layer. So on the sender side, it is getting the data from the above layer. यहाँ पे आपके पास physical connections होते हैं. So physical layer से on the receiver side, physical layer will be passing on the data to the data link layer, to the network layer, to the transport session, presentation, and application. So basically on sender side, it is getting the service from the above layer, and on the receiver side पे कहाँ से service मिल रही है? From the below layer. So this means that both are correct. So that's why it's option C, both A and B. Okay, so this is the reason. Next one, this is also based on the computer networks. Very good. So who it is simply asking that who developed standards for the OSI reference model. तो हमें मालूम है this is ISO, so that is nothing but International Standards Organization. Nothing much to explain in this question. तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं आते कंप्यूटर नेटवर्क से, जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उसको भी ध्यान में रखना है, उसके बेसिस पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं. अब जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपने 10 सेकंड्स में आंसर रिटर्न कर दिया, तो ये वाली जो क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं ना, ये इनको हम बोलते हैं बोनस मार्क्स, फ्री के नंबर. तो ये कब ले सकते हो आप? जब आपने थ्योरी को भी ढंग से पढ़ा हुआ. नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द कंप्यूटर नेटवर्क्स. Yes, we call it as ISO OSI model. Which address is used to identify a process on a host by the transport layer? Transport layer पे कौन सा address use होते हैं?
दैट इज द पोर्ट एड्रेस। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो एड्रेस यूज होता है दैट इज द पोर्ट एड्रेस। कैन यू टेल मी दैट पोर्ट एड्रेस टेक्स हाउ मच बिट्स? How many bits are required to represent the port address? And on network layer, port address is represented by 32 bits. You sure? Data link layer. Port address takes how many bits? It takes 16 bits. Okay. Network layer पे कौन सी addressing use होती है? Which addressing scheme is used at the network layer? Very good. IP addresses are used. What is the size of an IP address? Yes, you can also call this as the logical address. Fine. Logical address. What is the size of IP address or the logical address? Yes, that is 32 bits. Next one is data link layer पे कौन सा address use होता है? Data link layer uses which addressing scheme? MAC address. Very good. Also known as the physical address of a machine. What is the size of the MAC address? All right, 48 bits. तो इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछा था कौन सा एड्रेस है। हो सकता है कि आपके पास मैच द फॉलोइंग में करके ऑप्शंस गिवन हो, सो यू शुड नो अबाउट दीज एड्रेसेस। फिजिकल लेयर पे एज सच कोई एड्रेस नहीं होते। सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर का भी एड्रेसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास पोर्ट एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेसेस एंड द मैक एड्रेस। तो कीप दिस इन माइंड। साइज ऑफ एड्रेस के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वन, again this is based on the properties of the responsibilities of the layers of the OSI model. This is from computer networks again. Framing is the responsibility of, very good, data link layer. It is simply asking that which is the layer that converts the packets to frames and frames to packets. तो sender side पे क्या होता है? On the sender side, डेटा लिंक लेयर के ऊपर वाली लेयर है नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर forwards the packets to the data link layer and data link layer will create the frames. यहाँ पे क्या होता है? डेटा लिंक लेयर के पास बिट्स आएंगी, header remove करके it will form the packets and it will forward it to the network layer. This is what is happening on the receiver side. So on the sender side, data link layer accepts the packets forwarded by the network layer and convert that to frames. Whereas on the receiver side, it takes the frames and converts into packets. In network layer, we can call them as packet or datagram. See, network layer पे हम packet ही बोलते हैं। Let me write here. यहाँ पे जो डेटा यूनिट है, गुड क्वेश्चन। तो ओके, डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा यूनिट है उसको हम बोलते हैं फ्रेम्स। यूजुअली दैट इज नोन एज फ्रेम्स। नेटवर्क लेयर पे डेटा यूनिट इज नोन एज द पैकेट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दिस इज नोन एज द सेगमेंट और डेटाग्राम। सेगमेंट और डेटाग्राम। अब क्वेश्चन ये आता है, मैम ये कैसे डिसाइड करेंगे कब सेगमेंट आएगा और कब डेटाग्राम बोलेंगे? सो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वी हैव टू प्रोटोकॉल्स। One is the TCP protocol and UDP. अगर TCP protocol use करते हैं, TCP और UDP में main difference is TCP is connection oriented protocol, whereas UDP provides the connectionless service. So, datagram is the term used
when we are talking about the UDP, this is for TCP. ये दो protocols हैं जो transport layer के protocols हैं. ऋषि, I hope ये clear हुआ आपको? But sometimes in general terms वो datagram या segment को भी बोल देते हैं. It's a packet of some X bytes of data. Okay, so until and unless बहुत particular terms पूछी हो तो you can simply ignore it. But otherwise, this segment and datagram term is used for transport layer. फिर हम usually network layer पे use करते हैं and data frames. Ma'am, ICMP and IGMP comes under the transport layer or the network layer. This comes under the network layer. Internet Control Message Protocol. But these two protocols are used at the transport level क्योंकि हमारे पास error reporting के लिए कोई चीज नहीं है. So that's why these protocols ICMP and IGMP are used. Next question. This is also from computer networks. Hamming code or this is the concept of the data link layer. So computer networks mean this is specifically based on the data link layer concepts. Hurry up. For a Hamming code, you have to calculate here. एक छोटा सा formula है हमारे पास. Just substitute the values and you'll get it. C. All right. Yes, C is the right answer. For a Hamming code of parity M, so parity bits are given by M. We know that total bits. यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे? Total bits and data bits. This is what we have to calculate. Total bits are nothing but that is this is also known as the code word. So total bits means code word that is formed by combining the parity bits plus data bits. अब हमें parity bits तो पता है, that is 5. Value of parity bits is 5. What about the data bits? So we have one general formula. 2 raised to power m is greater than equal to m plus data bits plus 1. Yes, very good. Formula is right. Now substitute the values here. M is given as 5, so it comes out to be 2 raised to power 5 is greater than equal to m plus d. M is given as 5. M is given as 5 plus 1. So this comes out to be 32 is greater than equal to 6 plus d. It implies that d is less than equal to 26. यानी कि डेटा बिट्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? दैट इज 26. Substitute here. Parity bits are of size 5. Data bits 26 है. This comes out to be 31. 31 are the total bits. So we have to return total bits and the data bits. That is option C. Okay. So this question was based on this formula. 2 raised to power m में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हम Hamming code का concept use करते हैं, then these parity bits are placed at the position of 2 raised to power. जैसे position 1 पे parity bit आएगी because it is 2 raised to power 0. That is 1. 2 raised to power 1, that is 2. 2 raised to power 2, 4. These are the positions of the parity bits. 2 raised to power 4. Parity कैसे calculate करनी है? That also we have discussed. So this way, these are the positions of the parity bits.
Alright? Clear हुआ? Next question. What is the access point in a wireless LAN? मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ. कई बार क्या होता है, कुछ टर्म्स हमारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमने टर्म्स नहीं सुनी होती हैं, तो थोड़ा सा लॉजिकली जो वर्ड गिवन होता है ना, उसका लिटरल मीनिंग फाइंड करके देखो एंड ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. समटाइम्स दिस अप्रोच वर्क्स वेल. तो ये मैंने इसलिए बोला है ताकि आप सब लोग अपना रिस्पॉन्स दो. ऐसा नहीं है कि मैम वी डू नॉट नो व्हाट इज दिस एक्सेस पॉइंट इन वायरलेस लैन. नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर. एटलीस्ट गेस करके देख लो. एक्सेस पॉइंट का मतलब क्या होता है? थ्रू विच यू कैन एक्सेस समथिंग, राइट? यू कैन कनेक्ट टू समथिंग. Okay, so Pooja, is it a guess or you know what is the access point? Let's understand the literal meaning of access point. Access point का मतलब क्या होता है? This is some point through which we can interact with something. तो अब यहाँ पे क्या पूछे? What is the access point in a wireless LAN? तो इसका मतलब wireless LAN में ये कौन सा point है? इसके थ्रू हम किसको access कर सकते हैं? Just try to connect related with the examples. Very good, good guesswork. It allows the device that allows wireless device to connect to a wired network. Access point है तो obviously this is some device. So it allows to connect to a wired network. Wireless device itself, तो wireless device को wireless से connect करने के लिए no access point is required. Right? So this looks like this might be related to the access point. Both device that allows wireless devices to connect to a wired network and wireless devices itself. वायर डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए तो कुछ पॉइंट चाहिए. जस्ट थिंक अबाउट देयर इज सम डिवाइस एंड यू वांट टू प्रोवाइड अ वायर्ड कनेक्शन, सो सम एक्सेस पॉइंट और सम पॉइंट शुड बी देयर जिसके थ्रू हम कनेक्शन दे सकते हैं. वायरलेस में तो कनेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट? सो वायरलेस itself is not required. All the nodes in the network, नहीं. So this is nothing but its option A. Yes, using option elimination. So this method really works. Okay, is this clear? So basically this wireless access point serves the interconnection, serves as the interconnection point between the wireless LAN and a fixed wire network. Okay, so answer for this question is it's option A. Next question, very, very easy, from operating systems. Dash is the elapsed time between the time a program or job is submitted and the time when it is completed. So basically, it is talking about the relation between completion time and the arrival time. That is turnaround time. Very good. So we know that turnaround time, usually we write this as TAT. Turnaround time is nothing but is the completion time of the job minus the arrival time of the job. That is turnaround time is equal to CT minus AT. तो यहाँ पे हमें क्या दिए? A job is submitted, that is arrival time, and the time when it is completed, so that is the completion time. So that is option B, turnaround time. Next question. Again from computer networks.
मैंने खुद से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, आपने देखा है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। कई बार क्या होता है, हम बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं, और आपने देखा कि 2021 में मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आए होते हैं वो बिल्कुल बेसिक थे। Now this is asking that TCP/IP model does not have dash layer, but OSI model have this layer. ऐसी कौन सी लेयर है जो TCP/IP मॉडल में नहीं है बट OSI मॉडल में? TCP/IP is a 4-layer model, whereas OSI is a 7-layer model. So we do have the network layer in the TCP/IP and OSI. Application layer भी दोनों में है, transport layer भी दोनों में है. तो कौन सी लेयर नहीं है? सेशन लेयर इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल. Correct? So this is A. We have the application layer, presentation. From your analysis, does this happen that PYQ of NILIT itself get repeated? Not exactly. मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग रेपिटेशन नहीं हुई है. क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट हुए, बट क्वेश्चन की फॉर्मेशन डिफरेंट होगी. निलेट के ही क्वेश्चंस निलेट में एज इट इज रिपीट नहीं हुए, बट गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हुए. Okay, presentation and session layer. So these 3 layers are combined into a single layer in the TCP/IP model. This is OSI. इसी तरीके से जो लास्ट 2 layers होती हैं, physical layer and the data link layer, that is also combined to a single layer. So that's why in TCP/IP we have just 4 layers, whereas in OSI we have 7 layers. Next question. This is from operating systems. In dash machine is executing operating system instruction. ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस कब एग्जीक्यूट होती है? ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हो ओएस की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं. दैट मींस व्हेन इट इज इन द सिस्टम मोड. सिस्टम मोड इज आल्सो नोन एज द कर्नल मोड. So answer, correct answer for this question is it's option A. यहाँ तक कोई डाउट? 2021 में 2 डिफरेंट पेपर हुए थे. वन वाज ऑब्वियसली दिसंबर में हुए थे. एक आईटी वाला था, एक सीएस वाला था. जो हमने ये क्वेश्चंस किए, दीज वर इन द सीएस पोर्शन. ओके, आईटी वाले क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे. एनीवन हैविंग एनी डाउट? अब आप देख सकते हो कि जो हमने क्वेश्चंस कल किए थे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स के, उनमें कंप्लीटली हमें क्या करना था? वी हैड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वी हैड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. अच्छे खासे कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स आए हुए थे, है ना? और जो 21 वाले क्वेश्चंस हमने देखे, उनमें प्योरली दीज वर द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस. न्यूमेरिकल्स बहुत रेयर था. आई गेस एक आधा न्यूमेरिकल आया, राइट? So this is giving the idea that we cannot skip anything. ना ही हमें theory skip करनी है और ना ही numerical skip करने. Both are having the equal priority. Is this clear? Now this is the question. Once this was asked in some session under the doubt, तो मुझे doubt समझ में नहीं आया इसमें. तो दिस इज बेस्ड ऑन द लीफ नोड ऑफ अ बी प्लस ट्री. लीफ नोड में मैंने आपको बताया है कि बच्चे हमारे पास एक ब्लॉक पॉइंटर होता है, बाकी जितनी कीज है हर एक की के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड पॉइंटर विल बी देयर एट द लीफ लेवल इन बी प्लस ट्री. इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास क्या होता है, इट सपोर्ट्स द सिक्वेंशियल एक्सेस. अदरवाइज बी ट्री में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सेस है. सिक्वेंशियल एक्सेस इज नॉट सपोर्टेड बाय द बी ट्री. Now here it is saying that the order of a leaf node in a B tree, in a tree B plus tree में order क्या represent कर रहा है? It is representing the maximum number of value and record pointer. That means if order is, let us assume order of B plus tree is M.
और m क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू एंड द रिकॉर्ड पॉइंटर्स। वैल्यू मीन्स कीज, कितनी कीज हो सकती है, m कीज, तो m ही रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे, राइट, record pointer plus there will be one block pointer and it should be less than equal to the block size. Now they have asked that what is the order of the leaf node. हमें order find करना है, that means we are supposed to find out the value of m. Here it is given that the block size is 1 kilobyte. Just substitute the values. 1 kilobyte means 1024 bytes. Data record pointer is 7 byte long. Data record pointer is given as 7 bytes long. So this comes out to be 7m. And the value field is 9 bytes long. That means 9m plus. And a block pointer is 6 bytes long. A key block pointer is, so this is 6. So ultimately this comes out to be 16m less than equal to, ये दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1018. Just divide it. M is less than equal to 1018 divided by 16. This comes out to be 63.625. Now question arises is, ma'am, do we need to consider here the seal value or the floor value? अब यहाँ पे हमें क्या रिटर्न देना है, we are supposed to return the value of m. इसको लॉजिकली सोचो, इन चीजों को याद नहीं करना होता है, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको सील वैल्यू बोलेंगे, कुछ फ्लोर बोलेंगे, फिर आप उनको क्रैम करोगे, वो सब नहीं करना है. यहाँ पे हमें m की वैल्यू चाहिए. m की वैल्यू क्या होगी, 63.625 से कम होगी, कम हो सकती है, इक्वल हो सकती है, बट हमें वैल्यू ऑर्डर किस में होता है, इट्स ऑलवेज द इंटीजर. तो 63.625 की जगह इफ आई बी टेकिंग दिस एज 64, तो ये जो इक्वालिटी है दिस वॉन्ट सेटिस्फाई. ये इक्वालिटी कब सेटिस्फाई होगी, व्हेन आई बी टेकिंग द वैल्यू ऑफ m एज 63. 63 कब आएगा, बाय टेकिंग, सिंस वी आर टेकिंग द लोअर वैल्यू, बिलो वाली 63.62 के नीचे वाली वैल्यू ले रहे हैं, दैट मीन्स हियर वी नीड टू कंसिडर द फ्लोर वैल्यू. ओके, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में हम हमेशा क्या लेते हैं, फ्लोर वैल्यू. अगर कहीं पे आपको सील वैल्यू मिलता है तो प्लीज एलिमिनेट दैट ऑप्शन. सो हियर the value, maximum value of m that satisfies the given equality is 63. So correct answer for this question is 63, not 64. But ma'am, in one of your session you told that the formula for computing, yes, मैंने formula बताया था. अगर आपके पास order is, order means the number of child pointers. If order is representing the block pointers, if order is returning the number of block pointers or child pointer, this is the default definition of the order. ये जो मैंने यूज किया था that was the default definition, but in our question here the definition of a order is given here. Order of a leaf node is the maximum number of value. You getting this point? Any other query? तो दिस इज द डिफॉल्ट डेफिनेशन. डिफॉल्ट हम तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, बट हियर द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर इज गिवन, सो वी हैव टू गो विद दैट. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन ए. दोज हु आर सेइंग इट्स ऑप्शन बी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा संजीव कि 64 क्यों नहीं लिया, बिकॉज इफ आई विल बी टेकिंग द वैल्यू ऑफ m एज 64 इट वोंट सेटिस्फाई this equality. Can I say that 64 is less than equal to 63.625? Can we say this? No, this is incorrect. 63 is less than equal to 63.625? Yes, equality is satisfied. So that's why 64 is not taken. Any other query? So this is all from my side. इस सेशन में इतना ही, क्योंकि इसके आगे जो 2021 के नेक्स्ट सेशन में, कल वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे 21 में जो आईटी पेपर में आए हुए थे, प्लस द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन ईयर 2020.
Those who are new on this channel, guys, subscribe the channel and यार आप लोग वीडियोस लाइक ही नहीं करते हो. मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, क्वेश्चंस छांट के पीपीटी बना रही हूँ, उसके बाद मैं पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े और आप एक लाइक तक नहीं कर रहे हो वीडियोस को. Anyways, to get the links of all the sessions and to get the PDF, आज वाली PDF मैं अभी share कर देती हूँ in next 5 minutes. So you can join this Telegram group, that is Shefali Ma'am Textbook. In this group, on the daily basis, you will get the PDF of all the YouTube session. You can post your queries and the doubts, and you can directly interact with me. Quizzes and polls will also be conducted. Let me show you from where you can join this group. And if you want to cover the complete syllabus, I know that कि चीजें YouTube पे हो रही हैं, but trust me, कभी भी 100% चीजें तो खत्म नहीं होंगी, है ना. For that you can join the super coaching batch, जिसमें आपको सारे topics के notes भी मिलेंगे, questions भी मिलेंगे, everything will be there. Tomorrow which subject will you start? कल अभी तक हमने सिर्फ 2021 तक के questions किए हैं. So you want to discuss till here or more questions? एनीवेज, तो इस तरीके से आपके पास वीडियो आ रही होगी. हियर यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट लिंक. कैन यू सी द कर्सर? फर्स्ट लिंक इज द लिंक फॉर द मास्टर क्लास. जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे, इट विल टेक यू टू द टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म और हियर इज द शेड्यूल फॉर द अपकमिंग मास्टर क्लासेस. ओके, तो व्यू मोर करके आप पूरा का पूरा शेड्यूल देख सकते हो. और जो पास्ट क्लासेस है, हियर दीज आर द पास्ट क्लासेस. You can also follow these classes. Okay, these are the free live sessions. अब इसके बाद अगर आपको सारे के सारे सेशंस एक्सेस करने हैं, you want to cover the complete syllabus. So here we have the super coaching batch. Second link is for the super coaching. As you click on this link, it will take you to the page of the super coaching. Here we have multiple tabs: courses, super teachers, demo classes, live series, mock tests, study notes, and pricing. You can go through all these tabs, and when you go to the pricing, so we have three plans for the super coaching. Super coaching में live sessions है, recorded sessions है, complete syllabus की recordings available है, even the programming concepts, technical, non-technical, each and every single thing is covered. So 3 months plan is for 3359, 6 months is for 4269, and 1 year plan is for 5179. सिलेबस काफी ज्यादा है नेलेट का. आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो 3 मंथ्स मीन्स आप खुद को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो. सो फ्रॉम माय साइड इट इज रिकमेंडेड कि एटलीस्ट गो फॉर 6 मंथ्स और 12 मंथ्स प्लान. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 900 रुपीज का भी नहीं है. इनफैक्ट I'll tell you how you can get the extra discount. You can apply here the coupon code. This is Shefali S. 6 months वाला अभी आपको 4269 में शो कर रहे. नाउ दिस इज रिड्यूस टू 3964, और कम हो गया. तो 3 मंथ्स के लिए, एक्स्ट्रा 3 मंथ्स के लिए यू जस्ट हैव टू पे 800 रुपीज मोर. दैट्स इट. Ma'am, does algorithm is covered in the PYQs? Rishi, almost covered. Today will be the last session on algorithms. मास्टर क्लासेस में हम एल्गोरिथम्स कवर कर रहे हैं. ओके, मैं अभी आपके साथ शेड्यूल डिस्कस कर देती हूँ. अपकमिंग क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने का मैंने सोचा है वो भी बता देती हूँ मैं आपको. आई होप दैट दिस इज क्लियर. बाकी आप लोग बेटा टाइमली लिंक ग्रुप को टाइम टू टाइम चेक करते रहा करो. यू विल गेट द लिंक्स. तो लिंक मिला. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो टुमारो, पहले मैं कल का बता देती हूँ. टुमारो will be covering the PYQs of ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. कौन से ईयर के करेंगे? 2021 एंड 2020. ओके, 2022 2021 के 2 पेपर थे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी कवर्ड. एटलीस्ट 5 इयर्स के तो करें, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे. आज डेली 2 सेशंस होते हैं. टुडे विल बी हैविंग द लास्ट सेशन ऑन द PYQs ऑफ एल्गोरिथम्स.
एट 9 PM एल्गोरिथम्स बेटा मैंने मास्टर क्लासेस में कवर किया। अगर आपको मास्टर क्लासेस PYQs देखने एल्गोरिथम्स के तो मास्टर क्लासेस देख लो। ओके, PYQs ऑन एल्गोरिथम्स। आज वाले सेशन में आई गेस हम लोग 2017 तक पहुंच चुके हैं ना, 2017 एंड 16 के PYQs I'll be covering. Otherwise, daily we are having 2 sessions. Like Monday to Friday, we are having 2 sessions. 5 PM on YouTube and 9 PM. बाकी इसके अलावा जो भी queries है, please keep on writing in the chat section. I'll refer to your queries and then we'll end our discussion. Textbook, masterclass, all these classes are free. ये दोनों सेशंस फ्री हैं, सिर्फ पेड में आएंगे सुपर कोचिंग वाले। सुपर कोचिंग, if we can't watch master class live, we can watch it at our convenience on textbook. Yes, you can, but I guess for that you need textbook pass, lifetime validity 500 rupees की, और I guess 1 year is for 250. इससे आप टेस्ट, क्विजेस ये सब भी एक्सेस कर पाओगे। लाइव सेशंस तो फ्री है, आई एम नॉट श्योर, मैं आपको बता दूंगी क्योंकि मैंने कभी रिकॉर्डेड मास्टर क्लासेस देखी नहीं। ओके, सो उसके लिए भी पास है। कोड फॉर सुपर कोचिंग is Shefali S. This is for extra discount, okay? Shefali S. And for textbook pass, that is Shefali S pass. जो ऊपर वाला कोड है उसके पीछे पास लगाना है। I have the pro pass, so definitely without any problem you can follow the recorded sessions. Okay, तो आज 9 PM पे हमारा लास्ट सेशन होगा एल्गोरिथम्स पे। बाकी आप मुझे बता सकते हो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कौन सा स्टार्ट करना चाहते हो, और यू वांट मी टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। कल थोड़े से डीबीएमएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि डीबीएमएस में आप लोगों के काफी डाउट्स आ रहे थे कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, तो कल हम एक क्विज कर लेते हैं डीबीएमएस पे। ओके, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स, ताकि पता चल जाए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक है। Because on YouTube or in the master classes I'll be just covering the important concepts, या फिर जिन concepts में आपको बहुत ज़्यादा doubt है, जो आप लोगों की साइड से suggestions आएंगी कि ये concepts cover करने, I'll be just covering those concepts on YouTube and in the master class. बाकी सारी की सारी चीजें डिटेल में 100% completion will be under super coaching. Any other query? अगर कोई क्वेरी नहीं है तो एक बार कंफर्मेशन दे दो, सो दैट वी कैन एंड द सेशन एंड आई विल सी यू एट 9 PM. एनी सजेशंस? एल्गोरिथम्स खत्म हो गया हमारा, आज लास्ट सेशन हो जाएगा। ड्राफ्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, प्लीज whenever you start those sessions. All right, बट उसके लिए आप लोगों को बेटा रेगुलर रहना पड़ेगा एंड कीप ऑन लुकिंग इनटू द टेलीग्राम ग्रुप की कौन से टॉपिक्स होने वाले, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना होगा आई विल पोस्ट दैट इन द टेलीग्राम ग्रुप, दैट नेक्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग दिस। ओके, सो दैट अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल सेट कर पाओ। So this is all from my side. Thank you so much, guys. I'll see you in the evening. Till then, take care. Bye bye. God bless you.